लोकसभा उपचुनाव के लिए केरल के वायनाड में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी का प्रचार अभियान लगातार जारी है और इस दौरान प्रियंका गांधी बीजेपी पर जमकर हमला भी बोलने का काम कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को केरल के वायनाड में चुनाव प्रचार जारी रखा। उन्होंने सार्वजनिक बैठकें की और रुक रुक कर वोटरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की आलोचना करना जारी रखा। प्रियंका ने भगवा पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि उसने जुलाई में इस जिले में हुए भूस्खलन का राजनीतिकरण कर दिया। उस प्राकृतिक हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और कई लोगों को दूसरी जगह भेजना पड़ा। When it came to give compensation, to send the funds required to help those families, those funds were not sent. അതുമാത്രമല്ല, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഇതുവരെ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിട്ടില്ല. Even a disaster like that, which caused immense pain to people, was politicized by the BJP. ഇങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ദുരിതവും വേദനയും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെ പോലും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് ബിജെപി ചെയ്തത്. So this is where we stand today. We stand in a place where you have to think about your country, you have to think about your own needs, and you have to think about what kind of politics you want prevalent in the nation. प्रियंका ने दिन भर कलपेट्टा और सुल्तान बाथरी में नुक्कड़ सभाएं की। उन्होंने कहा कि लोगों की बुनियादी जरूरतें अधूरी हैं। बेरोजगारी अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये सब केंद्र सरकार की देन है। As I said, basic services are not available. അതുമാത്രമല്ല, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമല്ല. And the discussion is not about this. Politics is not focused on resolving this. The politics of the BJP is only focused on distracting you from your problems. അതുമാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അല്ല രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ്. Because its only aim is to keep those who are in power remaining in power, no matter what the cost is. प्रियंका गांधी ने वायनाड के कई मुद्दे उठाए और उनके समाधान का वादा किया। उन्होंने भाई राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। साथ ही उम्मीद जताई कि वे उन्हें भी वोट देकर समर्थन जारी रखेंगे। Who is going to fight for your needs, put pressure on these governments to get you the better roads? Who is going to create a vision for Wayanad with some focus on food processing, on agriculture, on tourism, which can show the whole world the natural beauty of Wayanad and benefit the people of Wayanad? How are we going to work together to create this new vision and to work hard so that the future of the young people of Wayanad and of all of you is improved? If you give me the chance to represent you in Parliament, I will show you that I can work harder than anybody else for you. I will voice your grievances everywhere. I will fight for you. I will put pressure on the governments, state and the central government, and you will see that you will have by your side a tough fighter who does not back down when your needs are questioned. प्रियंका गांधी 7 नवंबर तक केरल में रहेंगी। उत्तर केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। वे रायबरेली से सांसद हैं। सीट खाली होने के बाद वहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। वायनाड में 20 नवंबर को वोटिंग होगी।